Now this is a function of x having the equation 4x plus 7 और generally इसी टाइप की equations आपको पेपर 1 में नजर आएंगी. इसके कुछ certain parts होंगे जो कि आपको 2 से 3 मार्क्स इन टोटल रिवॉर्ड करवा देंगे. Now मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मेट भी है फंक्शंस को लिखने का एंड दैट कुड बी विद अ जी. तो जी के साथ भी फंक्शन लिखा जा सकता है. इसमें भी राइट साइड पर आपको वही एक नॉर्मल अलजेब्राइक इक्वेशन नजर आ रही होगी, मे बी समथिंग लाइक दिस. नाउ व्हाट यू नीड टू लर्न ओवर हियर इज कि यहाँ पर जो जी ऑफ एक्स है उसका भी मतलब वही है जो पहले था, विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स. सो these are like the ways in which you could write down a function. A function लिखना हमने समझ लिया है, a function के parts कैसे आते हैं ये जरा समझेंगे हम. So let's say we have a question which is saying that f of x is equals to 2x plus k. So in the very first part they are saying that you need to find k if f of 3 is equals to 10. अब मुझे k फाइंड करना है जब f of 3 कितने नंबर के बराबर है, 10 के बराबर है. Now the thing to remember over here is that in place of x we have placed 3. x की जगह पर हम 3 लेकर आ गए हैं और उसके अगेंस्ट में मेरा पूरा आंसर इक्विवेलेंट टू 10 हो गया है. अब इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि आप x की जगह पर 3 लेकर आ गए हैं तो आप पूरी इक्वेशन में जहां भी आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह पर 3 प्लेस कर देंगे. k वुड रिमेन एज इट इज और इस पूरे फंक्शन का आंसर भी उन्होंने बता रखा है विच इज 10. So what we are going to do is we are going to equate that with 10, which is going to give you 2 times 3 plus k is equals to 10. And now you just need to simplify this and you'll end up getting k is equals to 4. Now moving forward into the next part. तो next part में हमें कहा जा रहा है that we need to find f of 5. Now for the exact same function what we need to do is we need to figure out the value of f of 5. तो f of 5 मुझे find करना है. Since x has been replaced with 5, तो जहाँ पर भी इक्वेशन में x था which was 2x plus k, तो x की जगह पर हमने क्या लिख देना है, 5 लिख देना है. So we'll put in 5 over here. K was already found as 4 and we just need to simplify this and we'll get the answer as 14. तो f of 5 14 के equivalent हो गया. Now moving forward. Now this one is something very important to learn and that is the inverse of a function. यहाँ पर जो आपको -1 नजर आ रहा है f के ऊपर, this is basically talking to you regarding the inverse of a function. तो फंक्शन का इनवर्स एक्चुअली आपने फिगर आउट करना है. तो फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने का तरीका ये है कि पहले आपने एक्चुअल फंक्शन लिखना है विच इज f of x is equals to 2x plus 4. k को मैंने रिप्लेस कर दिया है विद 4. Now what I need to do is I need to find the inverse. अब inverse find करने के मेरे पास दो तरीके हैं. The first one is the casual school method जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा most probably. वो तरीका ये था that the examiner or the teacher would tell you कि यहाँ पर आप लिख दें y. तो जहाँ पर f of x लिखा था वहाँ पर हमने y प्लेस कर दिया है and the rest of the equation is kept as it is. अब नेक्स्ट स्टेप में आपने x को सब्जेक्ट बनाना है. So we are going to make it y minus 4 is equals to 2x and then finally y minus 4 divided by 2 is equals to x. Once you are done with this, तो आपने लेफ्ट साइड पर लिखना है f inverse of x. y को आप रिप्लेस करेंगे with x
and the rest of the equation would go as it is. तो ये एक बहुत ही ओल्ड और ऑर्थोडॉक्स मेथड है जो कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं फंक्शन के इन्वर्स के लिए। अब एक इसका ट्रिक मेथड भी है which I have developed for your ease। वो तरीका क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि वर्ड इनवर्स का मतलब क्या होता है। What does the term inverse mean? तो इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट। The word inverse means opposite। अब ऑपोजिट बनाना है तो ऑपोजिट बनाने का तरीका ये रहेगा कि आपने सबसे पहले एफ इनवर्स एक्स लिखा है। यू हैड द ओरिजिनल फंक्शन ओवर हियर और इस ओरिजिनल फंक्शन का अब आपने ऑपोजिट करना है। तो एक्स को आप एज इट इज लिख दोगे, बाकी सारी चीजों को आपने ऑपोजिट कर देना है। सो इफ यू सी विद एक्स वी वर हैविंग 4 बीइंग एडेड अप, तो ये माइनस हो जाएगा। एंड विद एक्स 2 वाज बीइंग मल्टीप्लाइड, तो उसने डिवाइड हो जाना है एंड इट वुड कम डाउन एज द होल डिनोमिनेटर एंड दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। नाउ इफ यू सी, तो हमारा जो प्रीवियस आंसर था और जो करंट आंसर है वो एग्जैक्टली सेम है। इफ यू सी देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम। तो दोनों आंसर्स ठीक आ रहे हैं, दोनों आंसर्स पे आपको मार्क्स रिवॉर्ड होंगे। और एग्जामिनर जनरली ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए देते हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद सिंपल फंक्शंस। ये अगर आप देखें तो एक सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर कोई पावर वगैरह नहीं है। तो इस केस में हमारा जो क्वेश्चन होता है वो सिर्फ 1 मार्क के लिए होता है फॉर द इनवर्स, और आपने इनवर्स फाइंड करना होता है। सो सिंस इट इज फॉर सिंगल मार्क यू वुड ओनली बी रिवॉर्डेड फॉर द मार्क ऑफ आंसर। तो आपने आंसर के ऊपर ही मार्क को अटेन करना था। एंड सिंस यू आर गेटिंग द आंसर डायरेक्टली ओवर हियर, तो यहाँ पर क्योंकि आप आंसर को डायरेक्टली ला रहे हैं तब भी आपको 1 मार्क रिवॉर्ड हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमें इनवर्स फाइंड करने को कहा गया था जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ द एग्जामिनर इज सेइंग दैट आई नीड टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ 10। सो एफ इनवर्स ऑफ 10 फाइंड करना है। नाउ इफ यू सी, तो x की जगह पर मेरे पास 10 आ चुका है, तो इनवर्स वाले फंक्शन में 10 मैंने प्लेस करना है x की जगह पर और मुझे आंसर मिल जाएगा। सो the inverse function was f inverse of x is equals to x minus 4 divided by 2। Now since 10 is going to replace x, तो हमने x की जगह पर 10 रखा है। इक्वेशन में भी 10 पुट इन करेंगे and we'll get our final answer that is going to be 3। Now with that being said, हमारा जो पहला पार्ट है, एक पहली टाइप ऑफ द फंक्शंस वो कवर हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं सेकंड टाइप पर। सो second type of function could have a power like it is having 4x square plus 3। अब यहाँ पर मुझे फर्स्ट पार्ट में एग्जामिनर ने कहा है that I need to find f inverse of let's say 2। So what I'm going to do is I'm going to put in 2 in place of x। तो इक्वेशन में भी जहाँ पर भी मुझे x नजर आ रहा था वहां पर मैंने 2 को सब्स्टिट्यूट करना है। I'll make a square of it and then add it up with 3। तो हमारे पास हो जाएगा 4 times 2 square which is 4 as well, added up with 3, that's 16 plus 3 which is going to be equivalent to 19। तो f of 2 मेरे पास 19 के बराबर आ गया। now this is like for a single mark, जनरली ये 1 मार्क के लिए होगा और आपको वो 1 मार्क आंसर के ऊपर रिवॉर्ड हो रहा होता है। सो इवन इफ यू आर लाइक डूइंग इट डायरेक्टली इन योर हेड, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं एंड जस्ट गिव द आंसर राइट अवे, क्योंकि 1 मार्क के केस में करेक्ट आंसर ओनली की कंडीशन लगी होती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर ने कहा है दैट वी नीड टू फाइंड x if f of x is equals to 103। Now the scenario over here is कि हमें x फिगर आउट करना है जबकि x के लिए
कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई थी इक्वेशन में, जिससे कि पूरी इक्वेशन का आंसर कितना हो गया है 103. So we need to figure out that value of x for which the answer is 103. तो आपने इधर टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, आपने सिर्फ अपने फंक्शन को पिकअप करना है 4x² + 3. That was your function. Now if you see f of x is already equivalent to 103, तो जहाँ पर f of x नजर आ रहा है वहाँ पर आप 103 लिख सकते हैं like this. So what you just need to do is you need to make x as your subject. You'll take 3 to the other side and it would be subtracted. You'll end up at 4x² equals to 100, and then x² is equals to 100/4. That's 25, taking root on either sides, and we'll have x as 5. Now usually this type of question also comes up for a single mark. अगर कभी ये 2 मार्क्स का आ जाता है तो उस केस में आपको फिर वर्किंग भी दिखानी होती है और आंसर भी करेक्ट चाहिए होता है. But if it is for a single mark, the only mark would be on the answer. Now moving forward, so next part में examiner is asking me regarding f inverse of 5. तो अब f inverse of 5 मुझे फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन सच अ केस आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो जनरली 2 मार्क्स का होता है, और इस पार्ट में क्योंकि f इनवर्स ऑफ 5 पूछ रहे हैं तो आपने सबसे पहले इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को फिगर आउट करना है, उसके बाद आप उसमें 5 पुट इन करेंगे. तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालना होगा. द एक्चुअल फंक्शन वाज 4x² + 3, सो इट्स 4x² + 3. अब मैं इसको डायरेक्टली करने लगा हूँ, आप चाहें तो y वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, दैट्स completely your choice. But since we need to do a lot of working over here, so I'm going to save up my time and my steps as well. So I'll be doing it directly. Direct method क्या था? That since we are trying to figure out the inverse, आप opposite find करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने x को as it is रखना है, बाकी सारी working सारे steps को आपने opposite करना है. So if you see x was added up with 3, आप इसको subtract कर देंगे. Then x was being multiplied with 4, आपने इसको divide करना है. And then x was having a square, तो आपने square root लेना है. So this is how you make up an inverse of a function in a single step. तो यहाँ पर inverse आ चुका है मेरे पास. I'll be rewarded the first mark over here. पहला मार्क मुझे यहाँ पर मिल जाएगा. Now what I need to do is I need to put in 5 in place of x. तो इक्वेशन में x की जगह पर 5 को पुट इन करना है, and that would give me the values looking up something like this. So it's going to be 2/4, which is going to be root of half. Now if any one of you is from IGCSE, they can use calculators, and if someone is from O levels GCSE, तो आपको calculator allowed नहीं है. You are going to leave your answer until here. आपने यहाँ तक आंसर को लीव करना है, and that would reward you the second mark for the answer. तो एक मार्क आपका रिवॉर्ड होगा इनवर्स फाइंड करने पे, और दूसरा मार्क आपको रिवॉर्ड होगा आपके आंसर पे, if you're getting the correct answer. Now moving forward on to the last type of a question in functions. तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है with a dual function. So over here we are having f of x is equals to 4x + 7 divided by 3x, and g of y is equals to 5y minus 2. Now you don't need to be baffled with this type of a question जहाँ पर आपको फंक्शन में ना तो f नजर आ रहा है ना ही x नजर आ रहा है. That's completely okay. इसको भी आपने
इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के साथ ही कंसीडर करना है, लाइक फंक्शन ऑफ y। अब इसमें भी अगर आपने इनवर्स फाइंड करना है, आप इनवर्स वाली लॉजिक्स लगाएंगे, आपने कोई वैल्यू पुट इन करके आंसर फाइंड करना है, तो आपने सिमिलर लॉजिक्स यूज करनी है। यू आर नॉट गोइंग टू डाइवर्ट योरसेल्फ ऑनटू एनी अदर थिंग और एनी अदर कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सेम वर्किंग होगी विद नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी प्रीवियस क्वेश्चंस और प्रीवियस पार्ट्स। तो अब हम जा रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में एग्जामिनर मुझे कह रहे हैं दैट आई नीड टू फिगर आउट f ऑफ 3। तो मैंने f वाले फंक्शन में x की जगह पर क्या पुट इन करना है, 3 पुट इन करना है। दैट वुड गिव मी 4 टाइम्स 3 प्लस 7 divided by 3 times 3, which would become 12 plus 7 divided by 9, and that's 19 over 9। If you are in IGCSE again, तो आप इसको डेसिमल में दे सकते हैं। If you are from O levels, आप इसको as it is छोड़ सकते हैं। It is going to give you the answer as 2.1। Now this was easy, this was understandable, ये हम पहले भी कर चुके हैं। The difficult part would be to find the inverse of this function। Inverse find करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। The actual function was 4x plus 7 divided by 3x। Now what we need to do is we need to figure out the inverse। Again, अगर 1 मार्क का है आप डायरेक्टली कर सकते हैं। If it comes up for 2 marks, you need to show the working as well। तो मैं आपको दोनों methods दिखा देता हूँ। In the first one, we are going to use the concept of y। y का concept हमने यहाँ पर use करना है। f of x की जगह पर मैंने y को substitute कर दिया है and the remaining function is left as it is। I'm going to take 3x to the other side, it would become 3xy is equals to 4x plus 7। Now I'm going to take 4x to the other side as well, and that would become 3xy minus 4x is equals to 7। Now you can take out x as common, and that would leave you with 3y minus 4 is equals to 7। x को आपने सब्जेक्ट बनाना था, तो 3y minus 4 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, when we take it to the right side it would be divided, so we'll end up as 3y minus 4 in the denominator। In the very last step, as previously told, आपने यहाँ पर लिखना होता है f inverse of x, और जहाँ भी आपको y नजर आ रहा था वहाँ पर आप लोग लिख देंगे x, and that would be your final answer। Now this would be for 2 marks, लेकिन अगर ये 1 मार्क के लिए आता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? So what are the possible options then? तो उस केस में हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, and to solve it directly what we just need to do is we need to write f inverse of x, और एक ही पैटर्न पे आपका आंसर आता है। वो पैटर्न ये है that you are going to keep 7 as it is from the numerator, 7 को as it is रखेंगे, 3x को भी as it is रखेंगे in the denominator। The only thing which is going to change is 4x। ये जो आपको न्यूमरेटर में 4x नजर आ रहा है, एक तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, it would lose its x and it would have an opposite sign। तो आपका जो 4 है वो अपना साइन लूज करेगा, x भी लूज करेगा। So if it was to be a positive 4x, it would come down as negative without x। तो x भी लूज हो जाएगा 4 से, और साथ में साइन भी ऑपोजिट हो जाएगा। We can try out another similar question। Like अगर मुझे दिया जाता है f of x is equals to 5 minus 7x divided by 2x। So I'm just going to do it in a single step, और वो स्टेप ये है कि मैंने ऊपर जो सिंगुलर टर्म थी विदाउट वेरिएबल उसको एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर वाले नंबर को भी एज इट इज रखना है। The only thing which is going to change is the variable thing in the numerator।
तो न्यूमरेटर में जो वेरिएबल वाली चीज है या वैल्यू है वो आपको नजर आ रही होगी, वो ऑपोजिट हो जाएगी नीचे आके, इट वुड लूज x एंड इट वुड लूज इट्स साइन एज वेल। तो -7x था, पॉजिटिव हो जाएगा और विदाउट x आएगा। दैट वुड बी योर सिंगल स्टेप इनवर्स। नाउ इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। अगर सिंगल मार्क का क्वेश्चन होता है तब आप कर सकते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप फॉलो नहीं करिएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो बिल्कुल आखिरी पार्ट में मुझे कहा जा रहा है दैट आई नीड टू फाइंड f of g of 2। नाउ दिस इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। यहाँ पर सबसे पहले मुझे g of 2 फाइंड करना है। g of 2 फाइंड करने के बाद मैंने आगे के स्टेप्स की तरफ जाना होगा। सो फॉर g of 2 आई नीड टू गो टू द फंक्शन ऑफ g which is right over here 5y-2। तो 5y-2 में y की जगह पर हमने 2 सब्स्टिट्यूट करना है and that is going to give you 10 minus 2 which is 8। now g of 2 is equivalent to 8। तो जहां भी मुझे g of 2 नजर आ रहा था वहां पर मैं 8 लिख सकता हूँ। so I'll write 8 over here as well। f g of 2 में जहाँ पे g of 2 लिखा था वहां पर मैंने 8 को पुट इन कर दिया है and that is going to carry me forward। अब f of x वाला फंक्शन हमारे पास था 4x plus 7 divided by 3x। It was 4x plus 7 divided by 3x। Now since I'm going to replace x with 8, so my equation would look something like this: 4 times 8 plus 7 divided by 3 times 8, and that is going to give you 32 plus 7 divided by 24, which would be 39 over 24। Now again, if you are from IGCSE तो आप इसको simplify कर सकते हैं। If you are from O levels तो आपको simplify करने का option नहीं है available। You cannot use calculator and you are going to leave your answer as it is। तो f of 8 मेरे पास 39 over 24 आ गया है। आप इसको दूसरे फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं which was f of g of 2 and the answer turns out to be 39 over 24। I'm going to repeat what I have done over here right from the very first step ताकि एक बार recap हो जाए। So it was f of g of 2। तो आपने g of 2 पहले find करना है because it is placed in the very center। तो g of 2 find करने के लिए आप g वाला फंक्शन लेकर आए हैं। g का फंक्शन था 5y-2, y की जगह पर मैंने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया है right over here and then I'm going to carry my working to find g of 2। After that g of 2 की जगह पर मैंने 8 लिख दिया since g of 2 was 8 and I'm going to bring in the function of f now। जो x वाला f वाला फंक्शन था वो हम लेकर आएंगे क्योंकि x की जगह पर हम 8 सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं। तो पूरी इक्वेशन में जहां भी आपको x नजर आएगा वहां पर आपने 8 सब्स्टिट्यूट करना है and that is going to give you the final answer which is 39 over 24 and that is the entire concept of functions। यहाँ पर हमारा फंक्शंस हो चुका है कंप्लीट। इसमें कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी क्यूरी like anything which is not clear or anything which is like ambiguous तो आप पूछ लें, otherwise just let me know if it's perfectly clear। Yes, is everything perfectly clear in functions? Okay, perfect। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन हो चुका है कंप्लीट। ट्यूसडे की क्लास में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रांसफॉर्मेशंस। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडेज क्लास। सी यू इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।